नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर्स ऑफ अ सॉर्टेड एरे। तो करना क्या है कि हमको एक एरे दे रखा है जिसमें नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दोनों हैं। हमको उसका स्क्वायर करना है और उसे सॉर्ट करके रिटर्न करना है। तो ओरिजिनल एरे जो हमको दे रखा है वो भी सॉर्टेड है और हमको आउटपुट भी सॉर्टेड चाहिए। पर क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स हैं उसके वजह से होगा क्या कि अगर हम उन्हें सिर्फ स्क्वायर कर दें और रिटर्न करें तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, क्योंकि लाइक -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और लाइक 3 का स्क्वायर है वो 9 हो जाएगा। पर इसीलिए अब 16 फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, 9 जो है सेकंड लास्ट पोजीशन पे रहेगा, जो कि ऑब्वियसली डिडंट मेक सेंस। तो हमको कुछ और करना पड़ेगा। अब इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन सीधे मेरे दिमाग में तो आता नहीं है, तो हम लोग पहले इसका लाइक नॉर्मल तरीका से देखेंगे कि नॉर्मल तरीके से देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए मैं लाइक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा रखने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करने वाला हूँ। और टाइम पता नहीं कैसा, लाइक शायद से लॉग एन टाइप या फिर एन टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 2 पॉइंटर्स यूज़ कर रहे होंगे। तो क्या करने वाले हैं हम वो लोग वो थोड़ा देख लेते हैं। तो लेट्स फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड द स्क्रीनशॉट इज टेकन। लेट्स पेस्ट इट here. Now we can start like thinking about the algorithm or steps we can take to solve this. So what we can do is like, मेरे दिमाग में पहले से कुछ सोच के नहीं रखा है, तो फर्स्ट नाम दे देते हैं इसको, फर्स्ट अप्रोच। वो क्या हो सकता है कि हम लोग लीनियरली इटरेट करें स्टार्ट से एंड तक, और उसके बाद हम लोग सवाल पूछ सकते हैं इटरेट करते हुए कि क्या तुम नेगेटिव हो या तुम पॉजिटिव हो। ठीक, हाँ ओके, नाउ आई गॉट इट। एक पॉइंटर हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंटर हम एंड से स्टार्ट करेंगे। मैं पूछूंगा कि क्या तुम नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। एक्चुअली नहीं, लेट्स इरेज दिस डाउन। मैं सोच रहा हूँ कि इसको पहले स्क्वायर कर दिया जाए। हम क्या कर सकते हैं, इन सबको स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 16। और ओके नहीं, अच्छा ठीक है, चलो यही सोचते हैं, पहले देखते हैं हम कहाँ गलत जाएंगे। -1 का स्क्वायर 1, फिर 0 एंड देन 3 एंड देन 10। 2 पॉइंटर्स ले लिया मैंने, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। मैं पूछ रहा हूँ कौन सा बड़ा है। 16, तो मैंने 16 को, सॉरी कौन सा बड़ा है, हाँ लेट्स से बड़ा है। मैं इसे अभी अपोजिट ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं, चलो। 16 बड़ा है, 16 को पहले लिख लिया। फिर डिक्रीमेंट किया, पॉइंटर 1 पे आ गया। 1 और 10 में से कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 लिख दिया। फिर पॉइंटर को फिर से पीछे कर दिया, तो मैं आ गया 3 पे। और अब मैं पूछूंगा कि कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है। अब फिर इसको डिक्रीमेंट कर दूंगा, मैं पूछूंगा कौन सा बड़ा है, तो 1 बड़ा है, देन 0 बड़ा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट अप्रोच। ठीक, इसमें हम लोग पहले से ही एक एरे बना लेंगे, और एरे का साइज़ क्या होगा, जितना लेंथ ऑफ नम्स होगा, और इसे इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, और उसके बाद अपडेट कर देंगे। लाइक अपेंड यूज़ नहीं करेंगे, बस इसलिए क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है बिना अपेंड के कोड लिखना, ऐसा लाइक थोड़ा सुंदर दिखता है। ओके, तो एक तो ये अप्रोच हो सकता है, और ये प्रोबेबली सॉर्ट कर देगा। तो लेट्स फर्स्ट डू द स्क्वायर ऑफ नंबर्स। सो नम्स
is equals to I for I, sorरी I का स्क्वायर कर देना है ना, तो we would do square of I for I in nums, and actually to give a better name we could name it num. So for num in nums make more sense to me at least. So because we are using a for loop, it would run n times. Now what we have to do is take two pointer I comma j. Oh shit, wait and thought of, okay, let's do this. I comma j is equals to 0 comma length of nums minus 1. Then what we will do is we will take a while loop first. While I is less than j, and we will ask if nums of I is greater than nums of j, what we will do is let's make an array name return first, like ret is equals to uh, array with 0 element in it, like 0 integer as in not number of it, and the length of it would be len of nums. Then what we will do we need one more pointer? Actually, it's better to use append in this scenario. Let's use append. Ret dot append, because this is greater, we will append nums of I. Else we would have appended nums of j, and nums of j, and if j is appended, then we would decrement j, and if I ith element is appended, then we would increment I, and at last we would return the reverse of nums. So for reversing it, actually not nums, we will use return वाला array. So ret colon colon minus 1, which will reverse the array. Probably it should work. Let's run this and try it out. The answer is wrong. The problem is 9 1600. 0 is not there. What could be the reason for it? Okay, the reason is we have not used the equals to operator.
This is the reason only. And by that, this code would be executed, and this would help to insert the middle element 0, and this is accepted. And now let's submit it. But the problem is we are using extra space and then again an extra space in memory, which is not good. But somehow LeetCode says that I beat 92% of the people in memory. Like how? And in runtime I only beat 12, like 35% people. Like who knows why? Let's ask ChatGPT about it. Like the time matrix is actually very skewed because it depends upon the time server took. Like wait a second. Here is run time, but where is okay? Here is memory. Let's focus on memory. Then take a screenshot of it. Then ask ChatGPT about it. Analyze my code performance and discuss multiple optimal or better up a double P R O A C H approach. Okay. It's important to review a question. Good solution, nice solution. It's correct, clean, and interview acceptable. It's correct, clean, and already optimal in terms of BIGO. So your current approach is this. Square all element first, use two pointer, pick the larger and append the result, reverse at the end. Squaring loops will take n, two pointer takes n of n, and reversing take O of n time, total is O of n. Space complexity nums of squared, numbers जो है वो overn ले रहा है. This is why your runtime is fine, but memory is not not minimal. Okay, and this is what I was talking about, that I'm taking extra space. Nums over return O of n, ret list of n, total extra space of n. This is acceptable and standard, but not minimal. What you did well, you used two pointer, key idea of the problem, avoided sorting, which would have caused n log n. Obviously, if I have like squared all the numbers and then sorted it, it would have taken n log n. Clearly, logic is easy and reason about correct. Why your approach works conceptually. After squaring, large values comes from either and middle value or smaller. The correctly blah blah blah. Better approach क्या है ये बताओ. दो पॉइंटर लिया मैंने, उनको एब्सोल्यूट से कंपेयर किया और रिजल्टेंट के में मैंने नम्स ऑफ आई इंटू नम्स ऑफ आई किया, तो स्क्वायर भी इधर ही हो गया और बड़ा वाले का स्क्वायर हुआ. ओके, और ये बहुत इंटेलिजेंट सोल्यूशन है. वाह, नाइस टू लाइक सी दिस. मतलब एक ही लूप में हमने स्क्वायर भी कर दिया, एक ही लूप में हमने कंपेयर भी कर दिया, एक्स्ट्रा स्पेस भी हम ले रहे हैं. ओवर पेन मिनिमल रिक्वायर्ड. Yeah, but approach to in place modification not required but advanced.
तो एन लॉग इन कर दे रहा है तो बेकार है फिर. DQ based education are not better. Since array is sorted, the maximum square must come from either end. I use two pointer and fill the result array from back to maintain sorted order in one pass. ठीक है, बेसिकली एक्स्ट्रा स्पेस तो लग रहा है, पर डिसाइड कि मैं रिवर्स भी करूं उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है. Let's end this video here. Peace.